categorically speaking you can mention that he is not a rubber stamp officer. तुम्हें क्वेश्चन आया rubber stamp office पे, यही लिखना और जो हमने अभी अब तक सब कुछ डिस्क्राइब किया है उसको ऐड कर देना and say that he is not a rubber stamp officer. Picture clear? Now we are looking at the office of the vice president. अगर office of the vice president पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं article 63 of the constitution. Article 63 says there shall be a vice president. India में it is the second highest office after the president's office. Now we have adopted this structure from USA. Now USA में भी vice president का office है, okay? But वो vice president का office is analogous. Yes, it is doing the same function, but the scope is widely different. और वो हम थोड़ी देर में देखेंगे. So अगर तुम्हें question आएगा, where have we adopted the office of the vice president from? Then it is from USA. भाई ऐसा क्यों adopt करने जैसा ऐसा क्या चीज था भाई? What is so crucial about क्यों adopt करना पड़ गया? ऐसा क्या था जब प्रेसिडेंट बन गए थे तो वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाते? नो 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 नो. द रीजन ओवर हियर इज वाइस प्रेसिडेंट प्लेज अ वेरी ऑसम रोल. अगर तुम देखो वाइस प्रेसिडेंट कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, ओके, ऑफ द स्टेट, लेकिन ही इज द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव, दैट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ राज्यसभा. तो बड़ी सरप्राइजिंग इशू है. Okay, he is an executive who is the chairman of the legislative. In other words, he is the connecting link between the executive and the legislative. Are you understanding? इसलिए इसको बहुत बार बोला जाता है Vice President is the office of legislative or political continuity. Political continuity के ऑफिस है और ये स्ट्रक्चर इसलिए हमने बड़ा स्ट्रेंजली हमने इसको देखा. ये बड़ा स्ट्रेंज अरेंजमेंट है. You are an executive and still you are becoming the chairman of the legislative, that is the Rajya Sabha. Then we will realize that why did we take it from USA. Now क्योंकि ये chairman of the Rajya Sabha बनेंगे, ये chairman of the Rajya Sabha बनेंगे, is the executive जो खुद है ना, link. खुद ही एक proportional representation based house है. In other words, उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा लोग आएंगे, बिहार से काफी लोग आएंगे, गोवा से बहुत कम आएंगे, आसाम से मॉडरेट आएंगे. अब वो क्या रहा है? Despite of that, do you realize that even in the Rajya Sabha, you will have different states having different number of people being sent as members of the parliament. Now, within the Rajya Sabha, now why was Rajya Sabha made in the first place? Rajya Sabha was made so that her state को voice मिले. This was a spirit of bicameralism. This was a spirit of federalism. Now हमने राज्यसभा बना दिया. So आर्टिकल 79 ने राज्यसभा बना दिया that we will give voice to the states. भाई स्टेट से कि स्टेट भी है. You're understanding? इस पूरे प्लूरलिटी में कहीं ऐसा ना हो कि एक सिंगुलर खत्म हो जाए. So Goa goes to this राज्यसभा and Goa